Today I'm going to teach you unit number 5. यूनिट नंबर 5 को हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम आते हैं पेज नंबर 54. पेज नंबर 54 पर डियर स्टूडेंट्स लिखा है कि क्रिटिकल थिंकिंग में है extract the salient points of the unit and develop a mind map to summarize the text. जो रीडिंग हमने की थी उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी की थी, उसके आपने सैलेंट फीचर्स यानी नुमाया सैलेंट पॉइंट्स यानी नुमाया पॉइंट्स निकालने हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 सैलेंट पॉइंट्स निकालने हैं. अब जो लेसन है उसका सैलेंट पॉइंट्स निकालने के लिए हमें लेसन की तरफ भी जाना होगा कि लेसन में क्या क्या है, ताकि रिवीजन भी हो सके और साथ साथ में हम सैलेंट पॉइंट्स भी निकाल पाए. सो स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स द यूनिट रोड सेफ्टी. आई विल रीड एंड यू ट्राई टू extract the salient points from it. So I'm going to start the reading. Every day many people face road accidents. Some are killed and some are injured or maimed. So it is important for us to learn how to use the roads properly and safely. No sensible or careful person would like to be involved in an accident. As the roads are very busy nowadays, we should be very careful while crossing a road. It is safer to use a pedestrian crossing or an overhead bridge whenever one is available. Now look at the second paragraph. कहते हैं it is safer to use a pedestrian crossing or an overhead bridge whenever one is available. It is the salient point of this paragraph. जब पैदल चलने वाले रोड क्रॉस करते हैं तो क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉस यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉस को के ऊपर ही चलना है. अगर वो अवेलेबल नहीं है देन आपने क्या करना है कि बलाई ब्रिज का रास्ता इख्तियार करना है. ठीक है, इट इज़ द मेन पॉइंट to keep in your mind. Never cross a road by dashing across it. That is inviting trouble. If there are no crossings, then we must look carefully at right and left and cross only when it is safe. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर वहाँ पे क्रॉसिंग भी नहीं है और ब्रिज भी नहीं है, तब पेडेस्ट्रियन को क्या करना चाहिए? पहले लेफ्ट फिर राइट की तरफ देख के और ये सेटिस्फाइड हो जाए कि अब मैं महफूज हूँ, सेफ हूँ, तब उनको रोड क्रॉस करना चाहिए. द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं. सम ऑफ अस टेक बस टू स्कूल. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट ट्राई टू गेट ऑन और ऑफ अ बस while it is still moving. Once again, it is a key point, a salient point in this very paragraph कि जब आप बस में सफ़र करते हो तो ये ख्याल रखना है कि जब बस हरकत में हो, चल रही हो, तब आपने चढ़ना या उतरना नहीं है. It is also the key point in critical thinking which we will do on the whiteboard. We must not fool around while in the bus. A sudden lurch can send us knocking our heads against something hard. The next paragraph, riding a bicycle can be dangerous too. We must pay attention on the road and never cycle too far out to the middle of the road. We must obey all traffic rules. It is the key point that we must obey all the traffic rules. Why? Also, we must take sure our bicycle are in good condition with the working brakes, lights, etc. It is also once again a key point, a salient point कि आपने इस बात का यकीन करना है कि आपके साइकिल या गाड़ी के लाइट्स, ब्रेक्स और टायर की कंडीशन अच्छी हालत में हो. We should avoid, next paragraph, we should avoid overspeeding. Find out what causes you to speed up. Is there an urge to speed when you have a driver close behind? Or is it an effort? Or is it an effort to keep up with the traffic flow?
or do you simply enjoy overtaking? It is especially important to lower the speed while approaching schools on narrow roads, hilly areas, rural areas, and when visibility is poor. Wet roads and overspeeding may cause an accident. Next paragraph, dear students. Traffic rules have been designed with safety foremost in mind. It takes into account safety for all, including pedestrians. Preference is to be given to pedestrians and children in crossing the road. Follow the lane and keep the required distance between vehicles. It is important to display appropriate indications or signals, especially while changing lanes or before a turn. Respect for other drivers on the road is obligatory to road safety. A seat belt, also known as a safety belt, is a vehicle safety belt, which is designed to secure the persons sitting in vehicle against, next page, harmful movement that may result during a collision or a sudden stop. A seat belt reduces the risk of death or serious injury in a traffic accident. Next paragraph. Traffic signs are very important as they warn about accident-prone spots so that the driver can reduce the speed of the vehicle. Signboards on the road are vital clues about road design so that the person behind the wheel can exercise caution. There should be no compromise on the quality of brakes and tires. Now look at the student, this sentence, it is very key sentence in this very paragraph, that there should be no compromise on the quality of brakes and tires. Further, it is imperative to inflate tires with the right air pressure to avoid tire bursts. Bursts on road. Apart from it, lights and indicators should be in proper working condition. The last paragraph is, road safety is a collective responsibility of the government and people. We should always drive carefully and take all precautionary steps for our safety. The important thing is to stay alert at all times while using the roads. We must know what's happening around us. In that way, we can take necessary action to avoid danger whenever we see one. Road safety is very much up to how we use the roads. Use them carefully and we may be able to use them for a long time. Use them carelessly and we may never be able to use them again. So dear students, ये है आज का हमारा यूनिट रोड सेफ्टी. सवाल ये पैदा होता है कि इस यूनिट में वो कौन कौन से सैलेंट पॉइंट्स है, 7 सैलेंट पॉइंट्स हमने निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, ताकि हमें और मज़ीद आसानी हो जाए कि रोड सेफ्टी यानी एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से होते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. टुडे वी हैव द क्रिटिकल थिंकिंग, and in critical thinking we have some salient points. 7 salient points are given in your book, which we will extract from the lesson, from all the text. What are these 7 points? वो 7 points कौन कौन से हैं, which we will do now on the whiteboard. Salient points. Salient points. Here students, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना होगा कि ये लेसन किस बारे में है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट द लेसन. द फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1. दिस लेसन gives
comprehensive details regarding traffic rules. Yes students, the first point of this lesson, the first selling point is that this lesson, it means road safety. It means road safety. It means road safety. This lesson means road safety. Road safety. Road safety gives a comprehensive, जो एक मुकम्मल डिटेल देता है about what? It gives comprehensive details regarding traffic rules. Traffic rules के बारे में मुकम्मल हमें लेसन दे रहा है, डिटेल्स दे रहा है. So the next one is number 2. Now we will come toward the pedestrians. ہمیں ابھی پیڈسٹرین کی طرف آنا ہوگا. جب پیدل چلنے والے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کیسا روڈ کراس کرنا چاہیے. The pedestrian should use pedestrian crossing or an overhead bridge while crossing the road. جب پیڈسٹرین یعنی پیدل چلنے والے پیدل چلتے ہیں, روڈ جب کراس کرتے ہیں تب انہوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے انہوں نے زیبرا کراس کی طرف دیکھنا ہے, زیبرا کراس پر عبور کرنا ہے سڑک کو. اگر زیبرا کراس اویلیبل نہیں ہے then they should use overhead bridge. ٹھیک ہے, write on. The pedestrian should use pedestrian crossing. Pedestrian crossing or an overhead bridge پیدل چلنے والے کو زیبرا کراس, جسے ہم پیڈسٹرین کراسنگ بھی کہتے ہیں, کراس کرنا چاہیے. If not available then they should use overhead bridge. It is the second selling point of the road safety lesson. Now we will come towards the third one, which is, yes students, جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ اسکول جانے کے لیے بس کا استعمال کرتے ہیں. اب بس کا استعمال ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے, جب بس چل رہی ہوتی ہے تو چلنے کے دوران ہی بچے اس میں چڑھ جاتے ہیں, یا چلنے کے دوران ہی بچے اتر جاتے ہیں. So the next third selling point is try not to on or off the bus while it is moving. جب بس چل رہی ہے تب آپ نے اسے اترنا یا چڑھنا نہیں ہے. Write on. Try not to on or off while the bus is moving. جب بس چل رہی ہو then you should not off or on. جب بس حرکت میں ہوتی ہے تب آپ نے اترنا یا چڑھنا نہیں ہے. That will be the result of accident. یہ خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کے آپ یہ ایسا کرو گے یا چڑھو گے چلتی بس میں یا اترو گے تب آپ خدا نخواستہ گر سکتے ہو, اور جب آپ گرو گے تو پیچھے سے کوئی اور وہیکل آ کے کولیجن ہو سکتا ہے یا آپ کے اوپر خدا نخواستہ وہ چڑھ سکتا ہے. So the fourth one is we should follow all the rules of traffic.
ہمیں ٹریفک کے تمام رولز فالو کرنے چاہیے. اب جو مین رول ہیں وہ ہے آپ کے انڈیکیٹرز. ٹھیک ہے, وہ ہے انڈیکیٹرز کا صحیح استعمال. انڈیکیٹرز کا صحیح استعمال کیا ہے کہ جب آپ یو ٹرن لیتے ہو تو آپ کو رائٹ ہینڈ کی طرف یو ٹرن لیتے ہو تو آپ کو انڈیکیٹر اپروپریٹ انڈیکیٹر لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روڈ میں ہو, روڈ کے درمیان میں ہو, لین کو بدلنا چاہ رہے ہو, تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ انڈیکیٹر بدلو. سو رائٹ آن دا نیکسٹ رول نمبر 4. We should follow all the rules of traffic. It is important to display appropriate indications before U-turn or while changing lane. Dear students, it is very important point which we have to inculcate, and ہمیں ڈرائیو کرنے کے دوران اس پوائنٹ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. کیا ہے؟ we should follow all the traffic rules. Very major point. ہمیں تمام ٹریفک رولز کو اپنانے چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. It is important to display appropriate indication. آپ نے appropriate جو مناسب انڈیکیشن ہے, اشارے ہیں, وہ لگانے ہیں. کس ٹائم لگانے ہیں؟ before U-turn اور while changing the line. جب آپ روڈ پہ چل رہے ہوتے ہو, جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو, تب آپ نے اپروپریٹ انڈیکیشن یا سگنلز لگانے ہیں. جب آپ یو ٹرن لیتے ہو یا پھر ساتھ ساتھ میں روڈ کے درمیان میں سے لین کو بدلنا چاہے, then you have to display appropriate indication. Now we will come towards the fifth one. The fifth one is also very important, that avoid overspeeding. Overspeeding یعنی تیز رفتاری سے گریز کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب روڈ گیلے ہوتے ہیں, سڑکیں گیلی ہوتی ہے, اور یا آپ اوور سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہو, then it can or it may cause accident. Next one, fifth one, avoid overspeeding. Avoid overspeeding because when the roads are wet it can be caused accident. When the roads are wet, it can be caused accidents. Or you can say overspeeding may cause accidents. Overspeeding may cause accidents. Avoid overspeeding. Number one, when the roads are wet, جب سڑکیں گیلی ہوتی ہے, it can be caused accident. اس سے ایکسیڈنٹ کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے.
اوور اسپیڈنگ میں کاز ایکسیڈنٹ اور اوور اسپیڈنگ سے بھی ایکسیڈنٹس رونما ہوتے ہیں. Now we will come toward the next one, the sixth one, that is seat belts. Dear students, while driving the car, try or you should or you must fasten the seat belts. The sixth, we must fasten the seat belts while driving. We must fasten the seat belts while driving. It is also very important point to act upon. The last one is we should not compromise on the quality of brakes and tires. We should not compromise. Write down. We should not compromise on the quality. We should not compromise on the quality of किस चीज की क्वालिटी पे? Of tires and brakes. Keep in your mind, जब भी आप ड्राइव करते हो तब आपने कोई compromise नहीं करना है, समझौता नहीं करना है on the quality of tires and brakes. So dear students, these all are the 7 salient points. These all are the 7 salient points of your entire lesson. یہ وہ 7 points ہے جو آپ کے تمام لیسن میں سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں and which is part of your exercise. جو آپ کے ایکسرسائز کا ایک حصہ بھی ہے وہاں پہ ہے critical thinking میں ہے کہ 7 salient points آپ نے اپنے لیسن سے نکالنے ہیں. So the first one is, this lesson gives a comprehensive details. Which lesson? Safety. The lesson number 5, which is called the road safety. ان میں سے ہم نے 7 salient points نکالے ہیں. The number 1 is, this lesson gives a comprehensive details regarding traffic rules. The second, the pedestrians should use pedestrian crossings or an overhead bridge. Number 3, try not on or off while the bus is moving. جب بس چل رہی ہوتی ہے حرکت میں ہو تب آپ نے اس بس سے نہ اترنا ہے نہ چڑھنا ہے. جب کمپلیٹلی یہ سٹاپ ہو جائے then you can on, then you can off. Number 4, we should follow all the rules of traffic. ہمیں چاہیے کہ ہم ٹریفک کے تمام رولز کو اپنائیں. It is important to display appropriate indication. It is very necessary for all drivers. کہ جب آپ روڈ کے درمیان جا رہے ہوتے ہو اور ایک لائن سے دوسرے لائن کی طرف چینج کرنا چاہ رہے ہو then you have to display appropriate indication. اور if you are in mood of taking U-turn, اگر آپ U-turn کے mood میں ہو then also you have to put or display appropriate indication. So number 5 بھی یہ کہتے ہیں. Number 4, we should follow all the traffic rules. It is important to display appropriate indication before U-turn سے پہلے اور before changing lane یا پھر lane change کرنے کے دوران یا اس سے پہلے. The next, we must fasten the seat belts while driving. ڈرائیو کرنے کے دوران ہمیں سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے اور ضرور باندھنا چاہیے. It is very key point for the traffic rules. The 7th one we have, that is
we should not compromise on the quality of tires and brakes. हमें टायर्स और ब्रेक्स के क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता नहीं करना चाहिए. So dear students, I hope you understood today's lecture and I hope you may be aware now how to extract the silent picture from the lesson. हमने ये भी जानने की कोशिश की कि हम जो मोटे मोटे जो मेन सैलेंट और की पॉइंट्स हैं वो हम लेसन से निकाल दें और यहाँ पे लिख दें. इसीलिए for the same reason, first of all we read all the lesson and while lesson we extracted the salient points and then we wrote on the whiteboard. So now students, for your homework, आपके homework के लिए ये है कि once again you will read the lesson. एक दफ़ा फिर आप लेसन को रीड करोगे और रीड करने के दौरान जितने भी इसके अलावा इन 7 पॉइंट्स के अलावा जितने भी सैलेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं तो नोटबुक उठा के वो उस पे लिखने हैं. ये सैलेंट पॉइंट्स जितने भी हो, ये 5 भी हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं. एंड देन चेंज दीज सैलेंट पॉइंट्स इन योर ओन सेंटेंसेस. फिर आपने हूबहू वही सेंटेंसेस नहीं निकालने हैं जो आपके लेसन में हैं. आपने क्या करने हैं, वो सेंटेंसेस को अपने अल्फाज में चेंज करने हैं सो दैट यू मे understand how to attempt sentence and you may understand how to write a comprehensive paragraph which we have discussed in my previous lecture. जो मैं आपको अपने previous lecture में पढ़ा चुका हूँ कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है और सेंटेंस के बारे में भी हमने बात की है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस क्या है, उसके आखिर में क्या होता है. सो सैलेंट पॉइंट्स के निकालने का मतलब ही यही है, जो भी सैलेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसको हूबहू पहले आपने नोटबुक पे उतारने हैं. नोटबुक को उतारने के बाद फिर आपने उसको चेंज करने हैं अपने वर्ड्स में. जैसे ही आपने अपने वर्ड्स में चेंज किए देन मेक पैराग्राफ ऑफ दी सैलेंट पॉइंट्स. फिर आपने उसका एक पैराग्राफ बनाना है. देन अप्लाई द ऑल द रूल्स विच आई टोल्ड यू. वो रूल्स आपने अप्लाई करने हैं जो मैंने पैराग्राफ के बारे में बताया है कि पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होता है और उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा है, इसका बॉडी ऑफ सेंटेंसेस कौन से, और भी आपने फिर लास्ट में कंक्लूजन देता है. इट विल हेल्प यू to know how to write a paragraph. So dear students, thank you so much for watching me and the next lecture will be about the formal letter writing. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में होगा और उसके बाद एक और लेक्चर इसी में है, इसी लेसन के बारे में है. देन दिस लेसन विल बी फिनिश्ड. फिर हम कोई और नेक्स्ट लेसन ही स्टार्ट करते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग मी. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.